A very good evening friends. Welcome to Unacademy. कैसे हो दोस्तों? प्लीज ऑडियो वीडियो एक बार कंफर्म कर दीजिए. ओके, लेट मी चेक इनटू माय डिवाइस. प्लीज कंफर्म दी ऑडियो एंड वीडियो माय डियर फ्रेंड्स. और करते हैं अपना सेशन स्टार्ट. सेशन नंबर 4 ऑन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. ओके, ऑडिबल हूं, विजिबल हूं, ग्रेट. ओके, जस्ट ए मिनट. चालू करते हैं एक बेहतरीन सा सेशन मेरे प्यारे दोस्तों. ओके, गुड इवनिंग मधुंजय. सूर्य क्लियर है. मधुंजय कुमार ऑल गुड सर. स्वाति मिश्रा गुड इवनिंग सर. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त ऐश्वर्य पढ़ाता हूं आपको गेट ईएससी के लिए. आई हैव डन माय एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड बीटेक फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया. 4 times I have qualified GATE with my best AIR 226. I do have 6+ years of teaching experience and 2 years of industrial experience. और ये वो सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाता हूँ आपको Unacademy ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, Unacademy स्पेशल क्लासेस, as well as on Unacademy Plus. Theory of structure, RCC, geotechnical engineering and strength of material. है ना. कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लिखा नहीं है और हमें वो पढ़ा रहे हैं. तो दोस्तों, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यही सबसे निकल के आ जाता है. स्ट्रक्चर मैकेनिक्स है, सॉम मैकेनिक्स है, आरसीसी भी मैकेनिक्स है. सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज such an elementary subject which is indirectly being used in TOS, RCC as well as in strength of material. तो सोचा कि मैं ही आपको पढ़ाऊं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. चलिए नाउ आते हैं मेरे कोड के ऊपर. ये आपने देख ही लिया होगा. व्हाट इज दिस? इट इज S10. What is this S10? This is a code which you can apply before buying any Unacademy Plus subscription in order to avail 10% off. कोई भी Unacademy Plus सब्सक्रिप्शन मेरे किसी भी दोस्त को चाहिए तो वो लगा सकता है मेरा कोड S10 in order to avail 10% off. Is it clear? Now, why Unacademy Plus? Unacademy Plus ही क्यों चाहिए? Let's check into that. Unacademy Plus में दोस्तों आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेज यहाँ चलते हैं, वीकली टेस्ट यहाँ चलते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस यहाँ पे चलते हैं. दोनों ही भाषाओं में कोर्सेज हम लोग चलाते हैं, इंग्लिश में भी एंड हिंदी में भी. तो अपने लैंग्वेज कंफर्ट के हिसाब से आप अपना बैच चुन सकते हो. एंड देयर इज रैंक इंप्रूवमेंट बैच एज वेल. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस प्लस, इफ यू स्टिल नीड सम मोर गाइडेंस, okay, and personal attention from our Unacademy educators, so in that case my dear friend, you can go for iconic subscription, जिसके अंदर आपको मिलते हैं स्पेशलाइज्ड नोट्स, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस and personalized test analysis, isn't it? So you can say that our iconic subscription is just a superset of plus subscription. मतलब plus की each and everything is there and apart from that you are getting these add-on things. Okay, अब आते हैं शेड्यूल के ऊपर. मुझे पता है काफी टाइम लग रहा है but it is the starting of the month, so I have to convey to all my dear friends that what we have for you guys at Unacademy GATE CE at YouTube official channel, or you can say those batches which are free of cost for you my dear friends. है ना. तो एक दो दिन में आपको ये शेड्यूल हो जाएगा याद. आफ्टर दैट वी विल बी कमिंग डायरेक्टली टू द सब्जेक्ट. सो रेगुलर बैच में ला रहे हैं मैथ्स चेतन सर, स्ट्रक्चर अभिषेक सर, क्षितिज सर ला रहे हैं सर्वे, अविनाश सर ला रहे हैं एप्टीट्यूड. लैमिनार बैच जिसमें अभी आप मुझे देख रहे हो लाइव, इसके अंदर प्रांजल सर सोम लेके आए हैं और मैं ऐश्वर्य आपका दोस्त इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपके साथ लेके आया हूं. और रिवीजन बैच की अगर बात की जाए तो चेतन सर आपको ले रहे हैं मैथ, अभिषेक सर स्ट्रक्चर, प्रांजल सर सोम, क्षितिज सर सर्वे
and Avinash sir aptitude. Now, not only this, my dear friend, something more is there for you. Now, come to crash courses. क्रैश कोर्स मैं आपको पढ़ाता हूं सुबह मॉर्निंग मंडे टू सैटरडे, ओके, ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मृगांक सर, ट्रांसपोर्टेशन, आरसीसी, जियोटेक्निकल, बीएनसी एंड ओपन चैनल फ्लो. एंड रिगार्डिंग यूपीपीएससी एई क्वेश्चंस, चेतन सर, मृगांक सर, क्षितिज सर, बाबूलाल सर और मैं आपका दोस्त रोज लेते हैं क्लास हम 2:30 to 3:30 PM. So you can take the snapshot of this or you can watch this video again for the entire November month schedule. तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो हर एक सब्जेक्ट का टाइमिंग भी मेंशन है दोस्तों. दिन में 10 से 11 लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं पर डे एट फ्री ऑफ कॉस्ट. नाउ एमएसक्यू बैच. अब हमने सोचा कि भैया आईआईटी ने आपको दिए हैं मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन, तो उसमें अनअकैडमी गेट सी क्यों पीछे रहे. तो मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन और यू कैन से एनएटी बैच और मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन आप कह सकते हो कि ये बैच आपको मिलता है एट अनअकैडमी गेट सीई. एट अनअकैडमी गेट सीई ये बैच भी आपको मिलता है, जिसके अंदर आपको मैं ले रहा हूं आरसीसी सोम के बैचेस, मृगांक सौरभ सर ले रहे हैं एनवायरमेंट और सीएफएफएन के बैचेस और प्रांजल सर ले रहे हैं जियोटेक एंड स्ट्रक्चर के बैचेस. एंड दीज आर द टाइमिंग्स. चलो अब मुद्दे पे आते हैं भाई, अब मुद्दे पे आते हैं. अनाउंसमेंट बहुत कर दिया आज मैंने, अब आगे बढ़ते हैं दोस्त. सो टुडे इज द फोर्थ सेशन ऑन द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. टुडे इज द फोर्थ सेशन ऑन द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन माय डियर फ्रेंड. ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन. एक बार लाइक कर दो भाई सब लोग सेशन में आकर के, सब लोग एक बार लाइक कर दो आकर के. सो जस्ट ए क्विक रिवीजन. क्विक रिवीजन में मैं यही बोलूंगा कि अभी तक हमने पढ़ा है फोर्स, then the definitions of vector. After that we have seen multiplication of vector, and apart from this we have learned that how to find the resultant of vector, or you can say addition, subtraction, all those things, and orientation of the resultant. Orientation of the resultant. बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूं दोस्त. अभी ऐसा ही लगेगा आपको कि क्लास 11 चल रहा है, क्लास 11 चल रहा है, इस तरीके से भी आपको लगने वाला है. ओके, यस, फॉर माय न्यू फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यस, इट इज द फर्स्ट लाइव लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. इससे पहले जो आपको 3 लेक्चर मैंने दिए हैं दैट वाज इन द रिकॉर्डेड फॉर्म. तो आज मैं आपके साथ कमेंट्स में भी हूं और लाइव भी हूं, एंड टुडे आई कैन रीड ऑल ऑफ योर कमेंट्स माय डियर फ्रेंड. ए वेरी गुड इवनिंग कुणाल, गोविंद गुड इवनिंग, स्वाति गुड इवनिंग. चलिए, सो आई होप यू गाइस आर नॉट हैविंग एनी डाउट सो फार. सो लेट मी प्रोसीड द सेशन एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे, दैट इज इंपॉर्टेंट. आज अपनी डिमांड्स रखते रहना जो जो आपको चीजें चाहिए. तो आज का टॉपिक है दोस्तों रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस. रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स और यू कैन से फोर्सेस. आज वेक्टर को रिजॉल्व करना सीखेंगे. आज वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व करना सीखेंगे. जी अमन, आज ही होगा. आप पूछ रहे कब होगा? आज ही होगा. वैसे तो मेरे 2 टारगेट है आज के, रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर एंड फ्री बॉडी डायग्राम, बट दिस टॉपिक इज टू बेसिक और हर जगह डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज होता रहता है. सो आई वांट टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चन विद यू गाइस. आई वांट टू गिव यू सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस एंड दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे ओनली. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू हाउ टू रिजॉल्व द वेक्टर्स. Resolution of the vectors is very easy. Okay, resolution of the vectors is very easy. What does a resolution of a force mean? If we are replacing a single force by several components which will be equivalent in action to the given force is called resolution of a force, isn't it? अगर मैं किसी एक वेक्टर को अलग अलग दिशाओं में ओरिएंट कर लूं, उसके कंपोनेंट निकाल लूं, सच दैट कि जब मैं दोबारा से उन
वेक्टर्स को ऐड करूं, सो आई एम गेटिंग द सेम एंड सिमिलर वेक्टर, देन दोज ब्रोकन कंपोनेंट आर नोन एज dissolved portion of a particular vector or a particular force. Let me explain you, my dear friend, with an example. Let me explain you with an example. See here. ध्यान से सुनना भाई, इतने कम लोग. Yes, exactly, Swati. Breaking into the components, and now we will see how we have to break them into the components. Okay. Good evening, Archana. देखिए इधर, मान लीजिए मेरे पास एक ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है, लेट्स से यू कैन से 50√2 किलो न्यूटन, जिसका मैग्नीट्यूड है 15√2 या 50 किलो न्यूटन ही रहने दीजिए. ओके, एंड now I want to break this force. Now I want to break this force into two component. What are those component? एक हो गया इस दिशा में और एक हो गया इस दिशा में. Literally I want to check if I want to project this vector on these axes, then what is going to be the actual magnitude. और जब भी मैं उन दो वेक्टर्स को दोबारा से ऐड करूंगा, then I would be getting the same magnitude, isn't it? So that is the case here. So listen, let's say this x-axis is oriented at an angle of, let's say, 30 degree. Yes, ट्रस में बहुत यूज होता है, और अगर आपको आता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और आपको लगता है कि आपको ट्रस सीखने का मन है, देन यू कैन आल्सो वॉच माय वीडियोस ऑन स्ट्रक्चरल एनालिसिस. ओके, सो हु विल टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस 50 किलो न्यूटन एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द वाई कंपोनेंट ऑफ दिस 50 किलो न्यूटन. सो दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू नो. माय डियर फ्रेंड, टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर. देखो, मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए इस वेक्टर को यहां से डिलीट कर रहा हूं और दो वेक्टर्स लगा रहा हूं. इस एक को मैं दो हिस्सों में ब्रेक कर रहा हूं, हिस्सा नंबर 1 और वाई एक्सिस, हिस्सा नंबर 2 और एक्स एक्सिस, इन सच अ वे that whenever I am going to add these two vectors which is originally originated from 50 kilonewton and that is oriented at an angle of 30 degree from x axis, तो ओरिएंट करने के बाद जो ब्रोकन कंपोनेंट है उसका जब आप फिर से वेक्टर एडिशन करोगे माय डियर फ्रेंड, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगेन यू आर गोइंग टू गेट सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. मींस आपको रिजल्टेंट कितना मिलेगा, 50 के बराबर मिलना चाहिए. ओके, सो नाउ यस, स्वाति इज एब्सोल्युटली राइट दैट सर एक्स एक्सिस कंपोनेंट अगर हमें निकालना है, देन व्हाट वी हैव टू डू, मैं एक टॉर्च लेके बैठूंगा यहां पे, इधर से एक्स एक्सिस के सामने मैं टॉर्च लेके बैठूंगा और यहां लाइट मारूंगा और देखूंगा कि इस 50 किलो न्यूटन की कितनी छाया इधर आ रही है. तो इसका मुझे इमेज दिखेगा समवेयर अप टू हियर. ओके, एंड सिमिलरली माय डियर फ्रेंड, इफ आई वांट टू कैलकुलेट इट्स वेक्टर y प्रोजेक्शन, देन मैं क्या करूंगा, मैं इस बार यहां से टॉर्च लेके आऊंगा और देखूंगा कि y एक्सिस पे इस वर्टिकल दीवार पे इस 50 किलो न्यूटन का कितना छाया यहां पे आ रहा है. सो दिस रेड वाला वेक्टर एंड दिस ग्रीन वाला वेक्टर आर नथिंग बट सिंपली द प्रोजेक्शन ऑफ दिस 50 किलो न्यूटन ऑन द y एक्सिस एंड ऑन द x एक्सिस रिस्पेक्टिवली. लाल हो गया y प्रोजेक्शन और हरा हो गया मेरे पास x प्रोजेक्शन. ओके, नाउ टेल मी व्हाट अबाउट दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस. ये तो आप क्लास 9th में सीख गए थे दोस्त. क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि इफ दिस एंगल इज थीटा एंड इफ इट इज परपेंडिकुलर एंड इफ इट इज बेस एंड इफ इट इज हाइपोटेनस, then sin theta is equal to P over H.
and cos theta is equal to B over H, isn't it? So if you want to get the perpendicular component, then it is hypotenuse times of sin theta, and if you want to calculate the base component, then it would be hypotenuse times of cos theta, isn't it? So similarly, अगर ये लाल वाला force मुझे चाहिए, you can see this red one and this red one are same. So this is nothing but the perpendicular of this right angle triangle. So this red wala force, let me call this force as F1 for the time being, and let me call this force you can say F2 for the time being. So this F1 is equal to 50, which is hypotenuse, into sine 30 degree degree. Okay, and similarly my F2 is going to be equal to how much? 50, और ये base हो गया ना भाई, into cos 30 degree. Yes, so this is what? So F1 is equal to 25 and F2 is equal to 43.3. Root 3 by 2, 25 root 3, 43.3 kilonewton. Okay, so दोस्तों मैं बोलना ये चाहता हूं कि या तो आप F1 और F2 लगाइए, which are actually oriented at 90 degree. The angle between F1 and F2 is how much? It is 90 degree. या तो आप F1 और F2 लगाइए at an angle of 90 degree. ठीक है, this is option number first. Okay, second is या तो आप ये 50 kilonewton लगाइए at an angle of 30 degree. Both are going to give you same effect. Both are going to give you same effect. Okay, so let me explain you this in a more better way. Originally my vector was of 50 kilonewton and now I have two components here, F1 as well as F2. Okay, now just see here. अब मैं आ जाता हूं. अब देखो F1 और F2 की बात अगर मैं करूं यहां पे आप लोगों से, तो यहां देखिए दिस इज इक्वल टू F1, जो अभी अभी आपने मुझे बताया कि सर ये होगा 43.3 एंड दिस इज इक्वल टू F2, जो अभी अभी आपने मुझे बताया कि सर ये होगा 25 किलोन्यूटन. ओके, सो आई वांट टू चेक if I am going to add these two vectors, then what is going to be the resultant and what is going to be its orientation. So in that case, what you can do, you can simply draw a parallelogram here. Here the parallelogram will be nothing but the rectangle, and check the angle between these two vectors, which is 90 degree in this case. And my dear friend, this is going to give you resultant. This is going to give you resultant. Okay, so now what about this resultant? So resultant is equal to under root of 25 square plus 43.3 square plus 2 into 25 into 43.3 into cos 90, which is nothing but 0. This cos 90 is nothing but equal to how much? It is equal to 0. तो अब मेरे दोस्तों बता दीजिए what is going to be the value of R? Yes, 49.99. Swati Mishra, well done, very well done. So I can nearly say it 50 kilonewton, है ना? इसको मैं 50 kilonewton बोल सकता हूँ. This component is 0. So this is under root 25 square plus 43.3 square. Now what about the resultant orientation? Let's say this angle be phi.
देन माई tan phi इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू बी, और कितना हो जाएगा cos, सॉरी, it is equal to b sin 90 divided by 43.3 plus 25 cos 90. So this is 0, this is 25. So tan phi, if it is 25 by 43.3, in that case phi is going to be equal to कितना 30 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल. ओके, अमन पवार जी पूछ रहे हैं सर हमेशा वर्टिकल कोर्स रखिएगा क्या? नहीं, मैं वर्टिकल को कोर्स कहां रख रहा हूं. देखो, जिसके साथ एंगल बनता है वो कोस होता है, जिसके साथ एंगल बनता है वो कोस होता है, और जिसके अपोजिट एंगल बनता है उसको मैं साइन बोलता हूं. ओके, सो माय डियर फ्रेंड, मैं बस ये बोलना चाहता हूं कि 50 किलो न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इज एज सिमिलर एज if you are applying two perpendicular loads at 90 degree of magnitude 25 kilonewton in the vertical direction and 43.3 kilonewton in the horizontal direction. So this is a procedure. Yes, this is the procedure to know, Swati. It would come directly 30. It would come directly 30. If you will check, it will come directly 30 degree. Okay. Because it is 43.3 is something like 25 root 3, and if you are cutting 25, then tan phi is equal to 1 by root 3, and 1 by root 3 is nothing but 30 degree. Okay, with the horizontal. Okay, so this is, my dear friend, the concept of breaking of a vector into the various component, isn't it? ये जरूरी नहीं है कि आप किसी भी वेक्टर को दो ही हिस्सों में तोड़ो. आपका मन है यार, आप उसको 2 में तोड़ो, 3 में तोड़ो, 4 में तोड़ो, बट इस तरीके से तोड़ो कि उनको जब आप फाइनली ऐड कर रहे हो, देन यू आर गोइंग टू गेट दी सिमिलर वैल्यू ऑफ द वेक्टर. इज इट क्लियर? नो नीड टू से सॉरी, वी ऑल कैन कमिट मिस्टेक हियर बट नॉट देयर. यहां सब कुछ अलाउड है, यहां गलत बोलो सही बोलो, बट यहां बोलना जरूरी है. इज इट क्लियर टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स? टेल मी, इज इट क्लियर टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स? टेल मी. ओके, नाउ टेल मी वन थिंग. Okay, now see here, my dear friend. Suppose I am giving you a question here. Suppose I am giving you a question here that if this is my, you can say x-axis. Okay, and let's say this is my y-axis. Okay, and here you are having the, multiple vectors like this, of let's say 100 kilonewton. Okay, another vector you are having like this, let's say कितना हो जाएगा, इसको ले लो 50 kilonewton. Okay, and third vector maybe you can keep like this, and let's say it is again it is 100 root 2. Okay, so let me call it 100 root 2. Units are same, units सबको आप unity मानो. Let me call it this one, and this is 50. So angle की अगर बात करूं, so take it 30 degree. Okay, take it 60 degree. लग नहीं रहा 60 है.
देखो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि दिस बैच इज फॉर बिगिनर्स, बट इट इज नॉट ओनली फॉर बिगिनर्स। मैं बिगिनर्स के हिसाब से टारगेट कर रहा हूं यहाँ पे, बट इट डजंट मीन कि आई एम गोइंग टू स्पेंड ऑल ऑफ द टाइम लाइक दिस। ठीक है, दिस इज लैमिनार बैच। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लैमिनार बैच। इससे पहले मैं रिकॉर्डिंग फॉर्म में आया हूं आपके पास, तो ढंग से पता नहीं मैं एक्सप्लेन कर पाया हूं कि नहीं, बट आई वांट टू टेल यू द एम ऑफ लैमिनार बैच इज टू मेक यू हीरो फ्रॉम जीरो। ओके, so this is the reason why I am starting it with so much basics, कि मैं 11th क्लास की फिजिक्स से एकदम स्टार्ट कर रहा हूं। दिस इज द मेन रीजन, है ना। सो वंस वी विल बी कंफर्टेबल इन ऑल दिस स्टफ, आफ्टर दैट वी विल बी पुलिंग इट अप टू द एनी लेवल। ओके, सो नाउ माय डियर फ्रेंड, you have to tell me you have to tell me that if this is my x axis, this is my y axis, my question to you is that what is find net force in x direction. This is question number A. Second is net force in y direction. Question number 2. And third question is resultant force and its orientation. See, my dear friend, whenever you are having only two forces, two vectors, so at that time it is easier for you to find the resultant and its orientation. But there are more than two vectors. If more than two vectors are available, so in that case, my dear friend, how to find the resultant, that is important. Okay. सर चार वाले का फोर्स मतलब, ओके 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 ओके, टेक इट 50 यूनिट्स, टेक इट 50 यूनिट्स। ओके, तो पता नहीं मेरे पीछे फिगर आ रहा है कि नहीं, तो मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूं, एम आई ऑडिबल? चार वाले का फोर्स मतलब, ओके 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 ओके, टेक इट 50 यूनिट्स, एम आई ऑडिबल? ओके, तो पता नहीं मेरे पीछे फिगर आ रहा है कि नहीं, तो मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूं। Am I audible? Am I audible?
ओके हाँ वो ऑडिबल जानबूझ के नहीं था. I will be audible now, don't worry. Okay, so see here. Okay, see, first of all, let me calculate what is the net force in the x direction. So net force in x direction. What I'm going to do here, I will calculate it all the x-axis component. Okay. So देखो इधर कैसे करेंगे. So it would be projection of this in the vertical direction. So 100 cos 30, 100 cos 30. Projection of this in x direction, it is also going rightward. So plus 50 cos 60, 50 cos 60. But this 100 root 2 into cos 45 is going to go back in the negative direction. So minus 100 root 2 into cos 45 degree. Okay. Yes. So this F net is going out to be, F net in x direction is going to be how much? Tell me, my dear friend. So it is 50 root 3 plus 25 minus 100. So it is 50 root 3 minus 75. So tell me what is the value of this? My dear friend, please tell me the value of this. Tell me the value of this. अरे गाइस बताओ, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास. ओके, मोबाइल पे ही करता हूं. जस्ट ए मिनट. सो माइनस 75 प्लस 50 रूट 3. तो मोबाइल पे कैलकुलेटर चलाना भी आसान नहीं रह गया. पहले ऐड देखो. सो इट इज कमिंग आउट टू बी 11.60. आप लोगों का तो ये नहीं दिखाई दे रहा मुझे. So this much. So I can say that net force in the x direction is net force in the x direction is 11.602. 11.602. Okay, let me come back here. अब देखो जरा यहाँ पे. Yes, good. Now let me come over y. अब y पे आ जाते हैं. So y अगर आप देखोगे, fy in y direction, this was in x direction. So it was coming out to be how much? 100 sin 30. This one, this projection is 100 sin 30. Okay, so 100 sin 30 और ये हो जाएगा मेरे पास कितना? माइनस 50. दिस वन माइनस 50 sin 60. ये भी आ जाएगा माइनस लाल वाला, नीचे की तरफ जा रहा है. माइनस 100 रूट 2 इंटू साइन 45. Sin 45 लिखो, cos 45 लिखो, doesn't matter, but I want to be mathematically correct, so I have to take this angle as sine of the angle. Okay, very good स्वाति. तो बताइए स्वाति कितना आ रहा है F net in the y direction? So it is coming out to be minus
30 किलो न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलो मैं आपका मान लेता हूं आंसर। 93.3 भी है, 94 भी है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो डू आई हैव टू कैलकुलेट इट अगेन? सो लेट मी चेक इट वंस। एक बार इसको देख लेते हैं कितना है। सो 100 sin 30 माइनस 50 sin 60 minus 100. So 93.3 is exact. Swati is absolutely right. 93.3 एकदम सही है. Negative is showing that resultant is going in the downward direction in the y-axis. So this is my second force. ये हो गया मेरे पास पहला फोर्स 11.602 and this is going to be my second force 11.602 and 93.30. Okay, so that is the concept here, my dear friend. Okay, so दो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए. So net force in x direction and net force in the y direction. So both of these questions have been. अच्छा, तेसु प्रसाद जी ने रिजल्टेंट आंसर मुझे बताया. Okay, okay. So how to find the resultant here? So resultant, let me show you with this blue color. तो मैं एक पहले रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम बना देता हूं. And this is going to be my resultant. This is going to be my resultant. So this resultant is okay. So as you are telling me that sir, it is coming as 94.02 units. So absolutely. And what about this angle? ये angle कितना हो जाएगा? So tan phi is equal to this 93.3 over 11.602. So here this phi is coming out to be. एंगल बताइए भाई, एंगल किसी ने नहीं बताया मेरे को. टेल मी द एंगल माय डियर फ्रेंड्स. So it is tan inverse of 93.3 over 11.602. 82.91. So it is 82.91 degree. So by this we have solved all the three components of this component question. Is it clear? Is it clear to all my dear friend? कोई डाउट हो तो पूछिए. यहां तक कोई डाउट हो तो पूछिए. ओके माय डियर फ्रेंड्स, कोई डाउट हो तो जल्दी पूछ लो भाई लोगों. Okay, no doubt. In that case we are going to do another question. एंगल 92.45 आ रहा है. हाउ कम?
92 नहीं आएगा, 92 नहीं आएगा स्वाति। देखो 90 कैसे आएगा, 92 कैसे आएगा, इट इज 93.3 ओवर 11.6। 1090 ही इंफिनिटी हो जाएगा, एंगल तो आपका कम आएगा। प्लीज चेक स्वाति और आंसर वंस। स्वाति एक और अपना आंसर चेक कीजिए। 10 5 93.3 over 11.6, so it is coming out to be 82.91 degree, 82.91 degree, which is absolutely correct. Please check your calculation, my dear Swati. Okay, okay, my dear friends. So let me take a problem from the famous book H.C. Verma. So write down the question, my dear friend. Find the resultant of these three vectors. Just a minute. Let me copy paste the figure here. Let me check if it is possible. Yeah. Okay, my dear friend. Question is, find the resultant of these three vectors. Okay. So give me the solution. So you can take 2 minutes for this. 3 मिनट ले लीजिए चलो. Take 3 minutes for this. Okay. This is not you can say the force, but these are the displacement. So displacement is also the vector quantity. Yes, प्रसाद जी मेरा भी 82.91 ही आ रहा है. Okay. No need to say sorry Swati. है ना? Just consider me as your elder brother. आपका बड़ा दोस्त एक. So no need to feel sorry. Ultimate aim is कि हमें बाद में जाके गलती नहीं करनी है. Okay. चलिए. So 3 minutes is the time limit for this. So give me the resultant displacement. Okay.
ओके माय डियर फ्रेंड, तेसु जी बोल रहे हैं सर 8.6 अप्रोक्स। कोई दिक्कत नहीं है अप्रोक्स वगैरह से, देखते हैं कितना है। तो हियर what to do here, see, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कैलकुलेट ऑल दी एक्स कंपोनेंट। अब देखो एक्स कंपोनेंट कौन कौन से होंगे। ओके, एक्स कंपोनेंट देखिए कौन कौन से होंगे। सो नेट डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन is 5 cos 37 plus 3 will come as it is, और इसकी अगर छाया x पे डालोगे तो कुछ नहीं आएगा भाई, because 2 cos 90 is going to be equal to 0. So this is 5 cos 37 plus 3. So cos 37 is 4 by 5. So it is 7 meter in x direction. Now let me calculate the displacement component in the y direction. So displacement component in the y direction is going to be how much? So this is going to be equal to 2 meter plus 3 का हो जाएगा 0 प्लस 5 का हो जाएगा sin 37. So this is 2 plus 5 into 3 by 5. So it is equal to 5. So I can say here, my dear friend, I can say here that this is going to be 5 in vertical upward direction and this is going to be 7 in the horizontal direction. तो ये हो गया आपका 5 मीटर, ये हो गया आपका 7 मीटर. So in that case, if I want to calculate the resultant, then how to find the resultant? How to find the resultant, my dear friend? So this is the resultant vector. और इसका जो वैल्यू आएगा, तो who will tell me? Under root 5 square plus 7 square. तो कितना हो गया ये? अच्छा वो बता देंगे अभी 35.53 डिग्री. ओके, लेट मी कम ओवर दैट, बट इट इज अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 8.602. 8.602 मेरा तो 8.602 आ रहा है भाई लोगों. ओके, मैं दोबारा चेक कर लेता हूं एक बार. अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 8.602. yes exactly 8.602 meter. So this is going to be the resultant displacement. मतलब कि वो जब यहां से यहां गया तो अल्टीमेट जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, that is going to be, this वाला line is going to be equal to how much? This is going to be equal to 8.602. And what about the angle here? This resultant angle phi is very easy to calculate. Phi is equal to how much? It is equal to tan phi is equal to how much? Y wala is how much? 5 by 7. So here phi is going to be equal to कितना आ रहा है दोस्तों? Exactly 37.18. ओके, देख भी सकते हो मुझे यहीं से पता लग गया था कि 37 के आसपास ही आंसर आएगा, बिकॉज व्हेन आई कनेक्टेड दिस टू नोट्स, तो ये लाइन इज वेरी मच सिमिलर टू दिस लाइन, कोलिनियर है ऑलमोस्ट. सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी सेम. एक्सीलेंट, वेरी गुड माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड. ओके ओके, सो नाउ माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी very very carefully.
See, tomorrow, I hope you all have joined the Telegram group. अच्छा, जल्दी से रिप्लाई करेंगे सब लोग. Are you all the part of Unacademy Gate CE Telegram channel, official Telegram channel? Just reply me fast. Are you all the part of Telegram channel of official Telegram channel by Unacademy Gate CE? My dear friend, अगर आप उसके पार्ट नहीं हो, then first of all see this link. इसका फोटो ले लो and join this channel as soon as possible. And join this channel as soon as possible, because tomorrow around 2 or 3 o'clock I am going to give you daily practice session, DPP, जिसको हम बोलते हैं daily practice paper और daily practice sheet. So tomorrow I am going to give you DPP here of 10 questions, and I will solve this question either tomorrow midnight or on Saturday or on Sunday morning. Okay, so जो भी time रहेगा I will update that time here, but this solution I will be providing on special class. तो आप सब लोगों को ये वो DPP अटेंड करके आना है और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल क्लास. एंड दिस DPP would be having questions from forces, resolution of vector, resultant, orientation of the resultant, product of vector, dot product, scalar product, vector product, etc. Isn't it? So आज हमारा वीक का लास्ट क्लास था. So next week Monday से I would like to start the free body diagram, but whatever we have studied in this week उसको मैं एकदम crystal clear रखना चाहता हूँ with not even a single scratch of doubt. Okay, so that is the reason why I will provide you DPP tomorrow, and I will give explanation to that DPP. I will give explanation to that DPP either tomorrow midnight or day after tomorrow morning. Is it clear? Okay. So आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, छोटा सा टॉपिक है. अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नए डे से, and be prepared for tomorrow DPP. I will try to send that as soon as possible. So आज यहीं तक रहने देते हैं सेशंस my dear friend. Although मैं एक्शन, रिएक्शन, फ्री बॉडी डायग्राम इन सब पे स्लाइड्स तो लेके आया हूँ, but I will discuss them tomorrow. And yes, it is our official YouTube channel. All these are some of the hit playlist. You can see इतने सारे लेक्चर्स हमने खत्म कर दिए हैं, इतने सारे टॉपिक्स हमने खत्म कर दिए हैं, और इससे ज्यादा टॉपिक अभी रनिंग में चल रहे हैं. रिवीजन बैच. यस स्वाति, नेक्स्ट क्लास ऑन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विल बी ऑन Monday, but practice sheets will be discussed tomorrow either or day after tomorrow on a special class. I will tell you each and every detail at official channel of Telegram group. Okay, so these all are some of the hit playlist here. And my dear friend, if any of my friend is interested in Unacademy Plus subscription, then you can always use #10 in any of the format, 12 month, 18 month or 24 month. And you have to pay 27,225, 34,650, 39,600 for 12 month, 18 month and 24 months. Okay, and if you, my dear friend, are planning for iconic subscription, then you have to pay 45,225 after applying #10 or 66,600 after applying #10. Why iconic is expensive? I told you at the beginning. Why this is expensive? I have told you at the beginning. Okay, so you can always follow me. इसको जरूर फॉलो कर लेना, तभी आपको मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे. ओके, एंड दिस इज आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल. वंस अगेन इट इज ऑन योर स्क्रीन, एंड राइट नाउ यू आर वाचिंग मी एट Unacademy Gate CE. अगर नहीं किया है आपने ये चैनल सब्सक्राइब, देन डू इट सब्सक्राइब जस्ट नाउ. थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड. हैप्पी वीकेंड, स्टे सेफ and don't go outside if it is not required. Have a great day ahead.